तो ये जो शॉर्टेज है या जो हमारी, जैसे मैंने कहा था ना 2010 में पाकिस्तान एनर्जी आउटलुक जो PIP बनाती है, इफ़ यू लुक एट दैट डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कहा दिखाया था, वी गेव अ 10-year प्लान, वी डन दैट एंड वी शोड कि ठीक है वो 2000 हमने शायद 20 या 22 कहा था, 20 में हो गया जो भी है, बट इट वाज वेरी क्लोज. सो इट वाज इंटेंडेड फॉर दैट, बट देन शॉर्टेज हुई तो आपने और कुछ ना टैपी आया ना IP आई. कंज्यूमर को तो आपने गैस देनी, तब क्या करें, बिल्कुल दें. बट देन यू हैव टू क्रिएट द सब्सिडी और द अमाउंट दैट यू हैव टू डू, बिकॉज लोकल गैस एंड इम्पोर्टेड गैस इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, डिफरेंट प्राइस, इट्स नॉट सेम प्राइस. वो सब्सिडी हमने अरेंज नहीं की, और जब वो अरेंज नहीं की तो वो फिर महंगी होती चली गई, वो डेल्टा बढ़ता गया, सर्कुलर डेट वाला. लेकिन बात ये है कि क्या पाकिस्तान ने कोई बहुत महंगी गैस खरीद ली है? नहीं. आप इसको यूरोप देखें, they since the Ukraine war, they have taken totally out. It was cheaper gas, but they went into LNG. Bangladesh is done everywhere. So जो गैस हमें प्राइस मिल रही है वो जो ही एरिया में मिल रही है. But people have gone for efficiency, they've gone for whatever subsidy you want to use the word, they've taken it away out of the consumer. इंडिया में अब LPG है, पाकिस्तान में नहीं, हमने सस्ती गैस देनी है, पाइपलाइन करनी है and all that. So if you want to not be prudent about it the way you want to do it, so it will always be expensive. Before we go to PS, so 2-3 सवाल हैं. टैपी क्यों नहीं आई, IPI कभी आनी थी, हैड यू एवर बिलीव्ड इन दैट, हालांकि उन्होंने तो बॉर्डर पे लाके फ्लेंच कर दी. एंड तीसरा, द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ पोर्ट कासिम एज अ पोर्ट टू हैंडल योर एंटायर एनर्जी मॉलिक्यूल कमिंग इनटू वन पोर्ट, व्हिच इज गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड वी आर डूम्ड एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न्ड. सो वेल देखिए, एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी कि दोनों आ जाएंगी, टैपी एंड IP. But the environment, the regional political and regional, yeah. TAPI was really the the Afghanistan war. Iran ka, everyone knows what it is. But aa jati, but it will only be limited, because pipe is limited, right? Correct. FSRU या LNG import terminal is not limited. Correct. It's only limited by the size of the Correct. FSI. और prices फर्क नहीं थी. ये भी एक myth है कि जी बड़ी सस्ती ईरान से मिलेगी, टैपी से मिलेगी. If you look at the formulas that I have seen, they're about the same rate, Brent pricing. Plus the pipeline tariff itself. People don't realize that. और उसकी फाइनेंसिंग, yeah. पाइपलाइन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है. टर्मिनल जो है जीरो, टर्मिनल इज जीरो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट. Yes. It's a lease cost. People don't like it. That's about, some people don't like it. But it's a lease cost. The government का investment है ही कोई. And immediately into operation. बिल्कुल. और तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, हुई नहीं है. And we sort of been caught in between. और हमारी एक्सप्लोरेशन भी स्लो रही है for one reason or ये intentional है या political हालात है KPK के, बलूचिस्तान के, कि we are I don't know the field too much, but do we have gas and oil in Pakistan? वो रिसर्च, वो कहते हैं ना, ड्रिल करोगे तो पता लगेगा ना. मतलब वो कहते तो हैं कि हमारे पास है साइज में, कि बलूचिस्तान में एक्सेस नहीं मिलता, ये नहीं मिलता. विच फ्रैंकली, इफ Exxon can walk into Balochistan and try and do this, or MOL can move in or do that. KPK. सारी दुनिया में फील्ड जो होती हैं वो तो सारी बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरियाज में होती हैं. करेक्ट. बिकॉज ऐसी सुई भी जो है वो भी चल रही है ना, लेकिन उसमें सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है. सो आई डोंट नो एक्चुअली व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन, बट कोशिश कर रहे हैं अभी भी. आई डोंट सी टू मेनी challenges at Port Qasim. Port Qasim, we are building everything around Port Qasim. well, देखिए KPT में तो टर्मिनल नहीं लग सकता, हमने देखा था. ठीक है ना. सो KPT was really out of the question. और स्टोरेजेस का चैलेंज है, there's no space available, naval installations are there. वो और जो लोकेशन उन्होंने दी थी, शहर आ गया पूरा बीच में. नहीं, जो इन्होंने हमें लोकेशन दी थी वो थी बिहाइंड दी नेवल इंस्टॉलेशन, एंड इट वाज ऑल सीवरेज एरिया. अभी तो आदमी बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता. हम चेक करने गए थे तो बड़ा मुश्किल था. बट पोर्ट कासिम 42 or as much kilometers of channel. Port Qasim, when the terminal was being set up, Port Qasim came and said कि जी वो चैनल को हमने वाइड करना है, ये वाइड, और डीपन तो उनको हर बारी करना पड़ता है, नहीं पड़ती तो because of the monsoons. So they were given $100,000 per ship extra. One of the reasons for the cost for channel widening. No, per as revenue to do that job. Okay. ठीक है.
And I remember Port Qasim chairman Agha Jan saying कि we need $20 million. So Khaqan Abbasi said, okay, for the next 200 jahaz, we'll give you, you add it into the tariff. And that's one of the reasons of the tariff increase. उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने इसको as a permanent चीज़ कर दिया. So today I think they have about $50 million sitting in their kitty. Port Qasim एक channel पर जो हमने simulation studies की थी, and with Shell, with Qatar Gas as well as with Port Qasim, showed that you could widen the channel, you could deepen the channel slightly, you could make the lay-bay areas, and crossing का मसला नहीं, कुछ नहीं होता था. And interesting इस simulation में ये भी था कि भाई जो बड़ा जहाज़ है वो विंटर समर में नहीं आ सकता, मानसून में, विंटर में आ सकता है, छोटा जहाज़ आप ले आए, वो आगे भी हो सकता था. So I don't know why they haven't done it, they should have done it. उसके बाद उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाने शुरू कर दिए कि जी वो डैमेज पड़ रहा है. हाँ, वो 500 मीटर जो आपका वो सेफ्टी वाला पैरामीटर है. मुझे याद है कि जो सिमुलेशन अब मसला ये था कि विद ऑल द नेगेटिविटी दैट वाज एलएनजी बिकॉज ऑफ द प्रीवियस कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, नोबडी वांटेड टू टच इट. तो मुझे अनऑफिशियली सारे पॉडकास्ट में कहते थे मसला ही कोई नहीं जहाज़ लाने में, एलएनजी का आप जो मर्जी जहाज़ दें, कोई मसला हम हैंडल करें. मैं कहता लिख के दो, लिख के देते थे. और ये I don't know, not too many people know, on the day that the FSI was supposed to enter Port Qasim, they stopped. They said we will not bring it in. Or 10 o'clock in the morning, the jahaz was supposed to come in. They said no. I said what happened? ये चीज़ नहीं हुई तो वो चीज़ नहीं. फिर eventually Captain Numan होते थे. He went. He sat. He was on his uniform, and all that. And he brought the jahaz and आराम से लाके खड़ा किया, उस पर जेटी पे खड़ा, ऐसा प्यार से उसने लाके खड़ा किया. And it was done. And Port Qasim में अभी भी जैसे I think 500+ जहाज़ आ चुके हैं अभी तक. So all the myths कि जी ये पटाखा बोल जाएगा, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये, and जहाज़ों का प्रॉब्लम होगा. You have to manage your ports and that's. But the other question that you raised, देखें, you're right, we need to diversify. I mean, as you know, the Gadani area में भी मानसून का मसला है, we know that. But we और कटी अंदर जो है उसको देखें, गवादर भी है. अब इन So you believe Gwadar is good for Pakistan? I would have reasons to ask because आप वहाँ पे molecule लेकर आएं या produce करें, you have to transfer it to your major consumer, which is Punjab. Now the pipeline and the tariff of the pipeline will be so significant. नहीं, वो सही है. I mean, that is why the Karachi और Port Qasim हर चीज़ रुक जाती है. हाँ. But if you look at the bigger picture, you have to. Of course you have to. So आप अगर बन जाता ये रिफाइनरी बन जाए तो वहाँ बड़ी आराम से पोर्ट बन जाता है अपना गडानी पे या हाप पे. हाँ. ग्वादर जो है with all the new western route and all that, you can do it. So there is a cost. Life is not without cost. But then you energy security तो देखें ना, जो point you raise is energy security. अभी तक ये पाकिस्तान के अभी सिक्योरिटी की बात ये है कि कराची पोर्ट पे आता है ऑयल, पोर्ट कासिम में आता है. पोर्ट कासिम बंद है तो कराची पोर्ट सारा हैंडल नहीं कर सकता. तो एक पाइपलाइन डालनी है. 1 लाख टन वाला जहाज आया था अभी PRL का क्रूड लेके रूस से, इवेंचुअली ओमान में STS करके लाए. यू कांट इवन ऑफलोड 100,000 वेसल है. And what does it require? It requires a pipeline. Absolutely. We did that project. We tried to do the feasibility और उसकी करनी भी हो सकती थी, मगर ये किसको करना चाहिए, किसको इशू है? ये PRL को इशू है. या पोर्ट्स को इशू है, सिक्योरिटी का इशू है. जब आपने इजाज़त भी नहीं देनी KPT में स्टोरेज की इजाज़त नहीं, you can't build any. So सिक्योरिटी की बात. So you look at the bigger picture. So Gadani is there. सर मैं एक पागल आदमी हूँ जो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है by virtue of 600 kilometers पानी and the depth that I virtually worked at Haque, 5 से 40 मीटर का clean draft, alhamdulillah, we can virtually become a regional player for the VLCs and super tankers discharge and regional. But anyways, but that is very important to see, because if you look at India has a bigger coastline, right? They have multiple ports, multiple terminals. Sorry. If you want to play that game, you have to play the region. Now it's the regional game. It is a regional game. Because आपको टैपी से आप बेशक लाएं, एक्सपोर्ट करें. सर लेकिन उस पर भी प्रॉब्लम है ना. देखें उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप UAE समझते हैं आप उनको हर्ट करेंगे, उनका फुजेरा और रासुल खैमा और ये. अच्छा इधर ओमान वाले हैं जहाँ STS चल रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स.
प्रॉब्लम ये है कि उनके व्हेन आई टॉक टू इंटरनेशनल ट्रेडर्स, $125 बिलियन का FSRU खड़ा करिए, $2 बिलियन आप साथ ट्रेड कर रहे हैं मॉलिक्यूल का, तो ये जो बड़े बड़े रशिया के जहाज़ आ रहे हैं पड़ोसियों के जाके छोटे STS हो गए, छोटे छोटे फिर फुजेरा पे आके फिर उस पर ऑक्टेन बूस्टर्स डाल के इवेंचुअली हमारे पास ही खपा रहे हो, हमारे पास उतार हमारे पास तो 25 करोड़ की मार्केट भी है, बट ये शायद हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, अल्लाह करें इंशाल्लाह। अब सर ये बताएं, शौकत मिर्ज़ा साहब ने PSO ज्वाइन की एंड गॉड ब्लेस हिज सोल, देयर वाज अ ट्रेजेडी, सैड व्हाट हैपेंड। तो आपको पता था कि PSO इज नॉट गुड फॉर एग्रो वाला, सो देन इवेंचुअली यू एंडेड अप विद PSO knowing everything, why and how? Well, I can tell you one thing. When I sort of came close to accepting my, or at least when the discussion started, I guess, I had my children sitting with me and they were all crying. नहीं करना। हाँ। So I asked them, Shaukat Mirza's incident was on top of the mind. खैर देखें, I didn't know PSO very well. I mean, मैंने तो कभी काम नहीं किया था गवर्नमेंट में. So I went around and talked to Zafar से मैंने बात की, शौकत तो खैर नहीं थे, लेकिन परवेज कौसर से बात की. People who had been with PSO or on the board and who knew our style of working and our culture versus PSO. And I, surprisingly, except for about 90% said join. Join. Wow. Okay. And this is peer group that I would respect, right? कोई होता ना on the path walkway में मिलता तो वो अलग बात. No. So that was one end final. The other thing that happened is, when frankly, it was by chance that I applied on this job. We were having dinner with a couple of with a colleague of ours. तो वहाँ बात हो रही थी, टर्मिनल लग गया हुआ था, टेबल खाली थी, काम ही कोई नहीं, उनकी करिए और उनकी करिए, और टेबल, और लकीली पहले दिन कमीशन हो गया जहाज़ में, माशाल्लाह. सो वो भी नहीं प्रॉब्लम है, हमारा ख्याल था कोई प्रॉब्लम आएगी. तो उससे मैंने वैसे ही बात कर रहे थे, यार अब क्या करें, वट एवर इट इज़. तो जिक्र आया कि PSO की नौकरी एडवर्टाइज हुई, तो उसने कहा यार करो. मैंने कहा पागल हो गया. वो कहते हैं ना, इवेंट्स इन लाइफ कम इन एंड यू डोंट नो व्हाई थिंग्स टर्न दैट वे. दैट वाज अ फ्राइडे नाइट. Sunday night I was doing some work on the computer, so I pulled out the advertisement. Online था वो, and put in the resume. I don't know why I did it, but anyway I did it. And I forgot about it. 4-5 हफ्ते बाद, whatever it was, सदात हैदर से बात हुई, फिर consultants. Then Khaqan Abbasi called me up and said कि आपने अप्लाई किया दिया. So I told him at that time, मैंने कहा सर वो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन I'm not serious and please drop the application. He said no. Why? I said I'm private sector, you public sector, we can't work together. But he said no, you have to discuss this. I had a discussion with him. And the final thing was that I told him that same thing. I said, and he said two things. He said, देखो, you worked with me on the terminal. I said, yes. Have I asked you for any money? Has anybody approached you from my side to ask money or any of the favors or whatever? I said, no. He said, that's the way it's going to be. So then I said, is that a personal commitment? I asked him specifically, is that a personal commitment? He said, yes. And that really tilted it for me. I mean, obviously, the job is a big profile job, largest company in the country and all that stuff. But that's what really happened. Yeah. And so I joined. And I, you worked in companies, you've run businesses. You need a good board, you need a good chairman, you would need somebody who guides you. He was a strategist. He is the one who would guide you and say, "Ke bhai, is tarah kar sakte ho, is tarah kar sakte." He would never impose upon himself. And that is probably what I survived. I say I survived. Because he would say, he had issues obviously. But if you told him, ye cheez is tarah nahi ho sakti, is tarah hoti, he would accept it. That was only Shahid Khan who would understand. No. I remember one meeting on the LNG terminal where I told him, Swiss Southern was asking $10 million of equipment from us. ना टेंडर में लिखा है ना कुछ, उन्होंने आके बीच में कहा कि हमें $10 million के वैल वगैरह चाहिए.
तो मीटिंग में कस्टडी ट्रांसफर वाल्व्स, कस्टडी ट्रांसफर वाल्व्स, हाँ मीटरिंग। तो मैंने खाकान साहब को कहा, मैंने कहा सर आई एम सॉरी, I don't have this money in the budget. I didn't put it in because they didn't tell me. If they told me, I would have put it in. Right? So I can't do it. But if you were to insist, I can't do it, I'll have to walk away. I told him. And this was $60 million exposure we had. तो उसके बाद खैर they backed off and all that. वो भी हमारे पर claim बन गया हमारे पर. मगर so This is where PSO. So before I ask you what went wrong, PSO का एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, डीजल, पेट्रोल एट्सेट्रा, और वी आर अनफॉर्चुनेटली एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। ना हम डॉलर हेज कर सकते हैं, ना हम प्राइस फिक्सेशन कर सकते हैं, तो वी आर एट द मर्सी ऑफ द ग्लोबल मार्केट प्राइसिंग, ब्रेंट्स एंड प्लैट्स, और फिर उस वक्त फिर आप प्रीमियम दे के माल ख़रीदते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्ट्रैटेजी बनी हो या कोई ECC में मूव किया हो कि यार हमें कोई परमिशन दो, दुनिया ले रही है फ्लैट -10, -20 और हम हॉस्टेज हैं +15-20 ले रहे हैं, वाई नॉट? वेल कोशिश हमने की थी, वी वेंट टू चाइना, वी वेंट टू रशिया, वी वेंट टू अबू धाबी, एडनॉक वगैरह, कुवैत से तो हमारा बड़ा डीजल का बड़ा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है और बड़ी अच्छी तरह चल रहा है, और हर 6 महीने बाद होता है, यू नो इट वर्क्स वेरी वेल। और कोशिश ये थी कि इसको अवॉइड करके वी गेट इनटू डायरेक्ट विद रिफाइनरीज। व्हाट शुड हैव, ब्यूरोक्रेसी में हिलाना चीज़ें, अप्रूवल्स कराना ज़रा मुश्किल काम है, और वो देयर वर टू मेनी फायर्स टू फाइट रियली, एंड दैट्स एन एक्सक्यूज रादर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज जब टेंडरिंग सबसे आसान है, फ्रेंकली फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव, टेंडर करो ₹5 है, ₹50 मेरा के जाता, बट from a business perspective, good governance, we try to improve initially the tenders, the RFPs, and we made it a little more, hopefully a little more better. हमारी एक लेज़ ही चल रही थी, हमने लोगों के 4 साल से डैमेजेस नहीं सेटल किए थे, वाओ, वो सेटल करने शुरू किए हमने। सो कोशिश हमने की थी कि हम रिफाइनरीज के पास जाएं और उनसे करें, उसमें रिवर्स होती थी, यू नो रिफाइनरीज आज आके कहते हैं मेरे पास 1000 टन अवेलेबल, आप ले लें, तो आपको जाके बिड करना पड़ता, लेना पड़ता। या मार्केट की फ्लक्चुएशन, मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट, फर्नेस ऑयल में हमेशा होता था, हम ओवर ऑर्डर करते, यस, और हम कह के थक गए थे कि ये मत करें, वो फर्नेस ऑयल आ रही हो तो वो हम ख़रीद लें, फिर आगे जैसे LNG में है वो हम टेक और पे टाइप कोट अंकर फिर फंस जाएंगे। तो it should happen. There's no question we should. But you tried, but you couldn't get it. But you know, उसमें सबसे एक जो पहली हिंड्रेंस आई थी कि हम गवर्नमेंट थे तो we wanted to do a G2G टाइप, ठीक है? Yeah. Which was the best way to go forward. उन्होंने कहा कि हम तो गवर्नमेंट है ही नहीं, हम तो देखें ना प्राइवेट, हम रिफाइनर्स हैं, हम प्राइवेट हैं, हमें तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई, आप ये G2G क्यों करना चाहते हैं? बड़ा उनको समझाने की कोशिश की, वो समझ नहीं, चाइनीज़ को भी समझाया, सिनोपेक वाला को नहीं समझे। सो वो होना चाहिए, एंड ये जो चीज़ है ना, जो एडवांटेज हुई से 2 months वाला, ये बाकियों को बड़ा एडवांटेज है। प्राइस सेटिंग, ऑफ कोर्स, not only that, but what the buggers do is, I mean, they get the discount and they open LCs on the premium and they siphon the money out. I mean, unfortunately. Before again we go to the debacle. Why did you did your best to bring in a refinery, to get a new refinery project? Aramco पे मुझे याद है आप कितना जाते थे China. Why did we fail? The will was there. No, the will was there. The first, I think it was the first MOU that Fawad and I went to Dubai. We drafted with the Aramco. Yeah. I think 17-18 की बात है, मुझे 17 की probably बात है. Because the king of Saudi Arabia was coming over to Pakistan, and it was expected that the MOU, and there was a G2G between PSO and all that. Wow. Unfortunately, वो trip cancel हो गया. उसके बाद Aramco came, I think 6 months later. उनका वाइस चेयरमैन आया था. We gave him a briefing, we explained all that to him. And we also told them very clearly that we'll give you guarantee of offtake. We will pick up your product, don't worry about your product. Of course, who would be a better partner for that? But वो साल में, this was just in the last year of that I was there. So उसके बाद इन्होंने फिर feasibility गए करने के लिए. आराम को ने कहा अच्छा feasibility दिखाओ, इनका feasibility कोई नहीं थी. यहाँ टीम इन्होंने बनाई मिनिस्ट्री में PSO के साथ मिलके. From what I hear, you know, I don't have authenticity, but I was told कि they went Aramco साइड feasibility ने कहा भाई, उन्होंने कहा जी फिर क्या करें, उन्होंने कहा जी आप बनाएं.
Aramco कह रही feasibility, मतलब you know we were not prepared. Sadly. That's what it is. अब वो one thing after the other होता रहा. अब वो you know if you look at it, it's 2016 आज 23 हो गई, 6-7 साल हो गए. 6-7 साल में तो प्रोजेक्ट लग जाना चाहिए. अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट. अच्छा ये बताएं कि जो वो मानसून आता है ना तो समंदर दूर से नज़र आना शुरू होता है, ज्वार बाटा. तो जब आप PSO में बैठे तो मानसून नज़र आ रहा था तो you didn't find an exit strategy at that time or you waited for the monsoon tsunami to come and hit you? What went wrong? नहीं, what went wrong नहीं. I think it was a belief that you know, and this is what my background is and all that. If you do your things properly, you work, you know, consciously, you are doing everything honestly, diligently, whatever, there is no reason to worry. And I was very clear on that. I did not realize, frankly, that there are more ifs and buts about it. You know, if I want to make it difficult for you, I can make it. Irrespective whether you are the frishta of the course. country, right? So, I think 2018 was my last year. तो उसके आखिरी 3 महीने में जो the first thing that hit or I realized was too late in the life was ARY ran a story, you know, saying that I had met the Prime Minister, was Haque at that time, and he had told me to run out of the country. Huh? और मैंने अपनी माँ को छुट्टी लेके जा रहा था ईद पर लाहौर में रहने के लिए. तो उसने चला दी खबर और मैंने ये सलमान योर हम नाम सलमान इकबाल. I called him up and he, you know, उन्होंने 2-1.5 दिन खबर चलाई और एक टिकट शाम को चला दी कि PSO ने कहा ये गलत है. वो वहाँ से शुरू हुआ चीज़. And then it went into Saqib Nisar, Chief Justice साहब. He started on a HR case which was primarily based on exorbitant pricing and all that, and ended up with hiring. Yeah, and salaries and all the perks and packages. Yeah. And he passed it on to NAB कि जी हायरिंग ले लें वहाँ से. फिर टर्मिनल तो आना ही था. टर्मिनल पे इतना शो मचाया, इतना शो. So a man of your integrity, जिसके लिए मैं हर प्रोफेशनल को जिसको मैं आज तक मिला हूँ, they can vouch for you and they can. तो इसका मतलब ये हुआ, I want your ending concluding remarks, इमरान भाई, कि anybody who wants to come and serve the country on any important position should be prepared कि उसके साथ eventually नैब के खाते भी खुलने हैं, उसने जाके जेलों में भी जलील होना है और वो भी करना है, या वो फिर डिसाइड करे कि उसने खिदमत करनी नहीं है. Unfortunately, that's what it should be. Unfortunately, I don't want to advocate that. But at the end of the day, and I think about this every time, was it worth it? From a country perspective, it was worth it. I think it was. If you look at the profitability that we had, I mean, the first 2 years later, 2 years we had gone up 160%. And you know, we got, I think it was $45 billion rupees worth of profit we had in 3 years. I think there were 11 strikes of truckers that we bore. And eventually the Corps Commander Karachi supported me and we got control of that. We tried to do a few things. मगर और आपने honestly किया. I mean, you know, I've challenged this to everybody and said कि मुझे बताएं 1 रुपए की भी निकालें. So if you do all that and you're honest about it and you do a terminal also, by the way, which is, you know, which Pakistan needed and was done and all that. And so end of the day you say, yaar, is it worth it? And a lot of people ask me that question when they're looking for a job, and I tell them very truly, and you know, I said, it really is a call you have to make. Are you willing to take the risk potential, or are you willing to not take it? If you're willing to, be prepared in whatever way you want to be. But if you think you can't take the chance, walk away. Unfortunate. I mean, as a professional, I should not be saying this. This country needs a lot of people, but environment is making you back off. Who's going to change that? Solution कौन देगा? Institutes like SIFC? देखा है? Institutes like SIFC? SIFC भी कर सकती है, लेकिन पार्ट ये है, देखें फिर क्या हुआ उसके बाद. 2-3 चीज़ें हुई. गवर्नमेंट को रियलाइजेशन तो है, मगर वो everybody realizes that laws have to be much more conducive. So there was an effort to do that.
ऑर्डिनेंस आया पिछली गवर्नमेंट में, फिर उसके बाद लॉ आया, लॉ फिर वो एंड में आके लास्ट चीफ जस्टिस ने उसको सस्पेंड कर दिया, स्टे दे दिया, व्हाटएवर, सॉरी थ्रू आउट। And those laws, if you look at the laws, were really supportive. The basic thing that has to happen is that I am not guilty unless you prove me I'm guilty. Of course. ठीक है ना? हाँ. But here it is different. You can accuse me today, and I have to prove that I'm innocent. Unfortunately, that's what the NAB ordinance was. So, जब वो rule ऐसा होगा ना, तो फिर people don't realize it. I mean, I had never been to a court. I had never been to I've not even seen what a NAB office is like. God bless. But you know, अब वो सब चीज़ें मुझे पता है कि लॉ में ये था ना, भी कोशिश भी नहीं की है, अभी देखी भी नहीं हमने। So उसके बाद रियलाइजेशन जो हुई है वो क्या हुआ, जब बनी ये अपनी सीपेक अथॉरिटी, सबसे पहले दिया गया कि जी यू वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ, यू नो, दिस अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद 2-3 और भी इंस्टीट्यूशंस बनी, उनमें भी हुआ। आजकल भी बड़ी बात हो रही है कि हम कर रहे हैं, आज बल्कि आज भी एक आर्टिकल आया हुआ है कि यू नो दे गोइंग टू डू दिस एंड दैट। द आर्मी चीफ हैज आल्सो गिवन अ स्टेटमेंट द अदर डे कि भाई वी विल यू नो हेल्प आउट। आई मीन यू नो, ये बात नहीं है कि आप Isn't this sad कि आर्मी चीफ has to come and say कि खुदा का वास्ते अच्छे लोग आ जाओ, मतलब ये तो फिर नहीं, वो मैं चीज़ बताने लगा हूँ कि देखो, इट इज़ नॉट जस्ट द फैक्ट कि आपकी हमारी जैसे टर्मिनल हुआ था, मेरा ऑडिट हुआ था इंटरनली, मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता मुझे लग गया, लेकिन ऑडिट हुआ। मगर ये एक्यूजेशन कहीं नहीं आई कि यार तुमने ये पैसे खाए हैं या तुमने ये बेईमानी की। जहाँ कोई प्रोसीजर वायलेशन है तो हो गई, लेकिन ऑब्जेक्टिव मीट हुआ, उनको पता था कुछ नहीं। यहाँ मसला ये है कि चले आप मुझे कर दें, मुझे आप कहें जी ऑडिट करें मेरा, मुझे वो करें, अपना इन्वेस्टिगेशन करें ऑल दैट, मगर उसके बाद एवरीबडी बैक्स ऑफ, यू सी यू लेफ्ट अलोन, नोबडी supports you, and that is the bigger expense for the individual. आपका केस कराची में आपको इस्लामाबाद में लग गया फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है हमारे यू नो जो केसेस हैं, पहले एक केस में 1 विटनेस अभी तक आया है 3 साल में, दूसरे में 10 विटनेस आए हैं 3 साल में, बट वो देखो 3 साल में द नंबर ऑफ ट्रैवल्स यू विल हैव टू डू, and it's all to your own account and you're just suffering. This is what the chief said, कि भाई ये we will support you this, right? That's what his statement is. So that is a bigger expense. Out of that, and then surprisingly, everybody has to cover himself. And you know, I don't blame everybody. हमारा जो hiring वाला reference है उसमें हमारा approver कौन है? The deputy secretary who did the whole process. LNG में कौन है approvers? Government. गवर्नमेंट में नहीं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, मैं क्या तो गवर्नमेंट ही है ना, इंटरस्टेट गैस एमडी, स्वीट सदर्न के एमडी, बुराना एमडी, ओगरा। So these guys, knowing that they've done something right, but then they of course they have to pull out, अपने आप को अपनी स्किन बचाएंगे। फिर तो जब आप जस्टिफाई ना करें या जुडिशली काम नहीं करेंगे और आपको पता है कि यार मैं आपको कर लूँगा इस तरह, तो फिर मैं क्यों करूँगा? That it's very unfortunate, you know. But I have invited you to say thank you for all the services, Imran, because knowing you as a professional and knowing people who have worked with you and the kind of integrity they all know that you possess, और ख़ास तौर पे मैंने आपको शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि अगर आपके साथ ये ना हुआ था तो प्रॉब्ली मैं स्टील मिल के बोर्ड पे आ गया था और आज मैं भी कहीं पे होता. So it saved me. But Imran bhai, thank you so very much. It was such a pleasure having you, because thank you for the time and keep doing the great work, and I'm sure inshallah अभी भी आगे बहुत टाइम है, पिक्चर अभी बाकी है. इंशाल्लाह everything will be turned out right. Thank you very much. Khawateen Hazrat, Sheikh Imran Sahab, the man, you've heard from him. We'll have another opportunity and more opportunities to speak to him. अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.